If it is glitching, if it is breaking, then please let me know. Okay. So Yes, sir. please write the topic. It basically tells about the यहाँ पे electrons ज़्यादा है. Sir, your voice is glitching. Yes, Rishita, what happened? Your voice is glitching. Oh, my voice is not clear. How about now? It's guys, अच्छा, you can tell me in the chat because आपकी आवाज ना फिर ये हो रही बंद हो जा रहा है. Is it any better, guys? It is still glitching. What to do? So let us try, है ना? So the electron displacement of time, the current effect. Other one is no stem. Always which is there, some condition is met. Okay, so permanent effect are of time. In fact, just give me a second, guys. Guys, am I audible now?
Yes, Yes, hello. sir. Yes, ठीक है. So inductive effect, then we have resonance. We have already seen a bit of resonance, and the effect that is created by resonance, it is known as mesomeric effect. So resonance is a phenomena which leads to mesomeric effect. Third is hyperconjugation. And in temporary effect, we have only one, that is electromeric effect. Electromeric effect. So we'll first of all start with the inductive effect, that is a permanent effect. Okay, please write the topic, inductive effect. No. Inductive effect में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखने की है ना, like you don't have to write it or anything else. अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूछा जाए, so you don't have to write whatever I'm going to write now. आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा that इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है. Not audible. Inductive effect, it is इसमें जो the driving force है, Sir, can you scroll up 1 second? is अच्छा sure. The driving force is electronegativity difference. Okay, sir. I'm done. Raise your hand once you're done writing. ठीक है ना. Please raise your hand once you're writing till the driving force is electronegativity difference. Waiting Pooja now. So when they ask what is inductive effect, then you are going to write definition. The partial shifting small electrons towards more electronegative element is called inductive effect. ठीक है. For example, let us suppose we have carbon atom that is connected to carbon. बाकी hydrogen वगैरह है यहाँ पे. I'm not going to bother about the hydrogen, but carbon connected to carbon. Once again, carbon. Then we have some element A, and the electronegativity of atom A is greater than that of carbon. Tell me guys, whose electronegativity is greater? A और carbon किसका ज्यादा है? बोलिए. Whose electronegativity particular? नहीं, A का ज्यादा है ना. The electronegativity of A is greater than that of carbon. So tell me, which is what is going to pull electron between in this bond? A. A will pull electrons. A is pulling the electrons like this.
and it is getting delta negative here. Carbon atom will get delta positive. So ध्यान से देखिए, if this carbon is having a delta positive charge, that means it is also able to pull some electron from the adjacent carbon. क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गई है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? Yes. एडजेसेंट कार्बन से ये कुछ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, सो यू विल हैव, it will pull some electrons and this carbon atom will get some delta positive charge. And then similarly this is also going to pull electrons, it will get some delta positive, very small delta, मतलब जितना delta add हो रहा है ना उसमें आप very small कर देते हैं. For example, delta positive is small positive charge. Delta positive means very small positive charge. Delta positive means very small positive charge, and at the end this carbon atom will have the lowest positive charge with delta, like the least amount of charge will be present in this carbon atom. Let us suppose this is 1, 2, 3 and 4 carbon atoms are present, है ना? We have 4 carbon atoms, and if I ask you guys which carbon has the highest positive charge, which carbon has? I mean the fourth carbon. First या fourth? Highest positive charge. इसमें हम बोलेंगे fourth has the highest, followed by 3, followed by 2 and followed by 1. Now this complete thing, the partial shifting, this is what it is happening because of inductive effect, है ना? ये जो सब में delta positive charge आ रहा है ना, it is happening because of the more electronegativity of atom A. अब हमको यहाँ से समझ में आया that inductive effect, it is distance dependent. If the electronegative element is nearer to the carbon, तो वहां से ज्यादा electron pull करेगा. If the carbon atom is further away, then that carbon atom will be having less electron pulled by the atom A. So एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे, that strength of inductive effect, it is inversely proportional to distance. Also we can say strength of inductive effect, it is directly proportional to the electronegativity of atom. ना? अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. Please write this down. Raise your hand once.
Sorry guys, I got disconnected for a while. Am I audible now? Tell me now, Rishita, Amna, Khadija. Yes, sir. Yes. All of you done writing this part? Yes, sir. अच्छा ठीक है. Now आपको जो basically inductive effect का use करना होगा, that is regarding stability. You will be using this to predict or to get the stability, order of stability when you have been given certain compounds. For example, write a question. Which of the following is most stable? Which of the following is most stable? A, you have CH3, CH2, COO negative. Second, you have chlorine connected to CH2, connected to COO negative. You have Br connected to CH2, then COO negative. Then you have iodine connected to CH2, further connected to COO negative. Okay. Tell me guys, जब भी आपके पास स्टेबिलिटी की बात आएगी ना, whenever you are going to talk about stability, the compounds or the species that will be given, they will have certain instability factor. वहां पे किसी चीज की वजह से वो unstable होगा, and within those unstable compounds or unstable species, you have to tell which is most stable. So can any one of you guess here that the instability, यहाँ पे instability आ रही है किसकी वजह से आ रही है? What is the unstable part in this whole compound? जैसे अगर फर्स्ट वाले A के बारे में अगर हम बात कर लें, in the A structure, what is the thing that is making that compound unstable? Any idea, guys? COO negative. Inside that COO negative, the negative charge is the part which is making this compound unstable. This particular chemical species unstable. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है. बाकी सब Amna, Khadija and Khudeja. This makes sense? Yes or no? Please tell me. You have to get a intuitive sense about organic chemistry. तभी आप लोगों को मजा भी आएगा, समझ में भी जल्दी आएगी. ठीक है. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी की बात तभी होगी when you have a few unstable compounds, and in that unstable compound you have to find out what is making this unstable. So usually it will be charged or incomplete octet. वो बाकी चीजें बाद में आएंगी, ठीक है. But here you can see that the negative charge. So that means I can say that stability जो है that is inversely proportional to charge. जितना ज्यादा चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और जितना कम चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. इज दैट क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. इफ द चार्ज इज लो then the stability will be higher. करेक्ट है? अरे बोलो भाई. Yes, sir. यस ना? खदीजा, खुदेजा, आमना, stability will be inversely proportional to charge. Yes or no? Yes. Make sense? Okay. Now let us see now कि now the negative charge को यहाँ से कौन कौन हटा रहा है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद whenever you have to compare a few structures, don't compare what is same. Will it be beneficial if I compare COO negative, COO negative, COO negative and COO negative? Tell me. Is there anything to compare in COO negative? No, all of these are same. CH2, 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 CH2. इसको कोई compare करके फायदा होगा? Tell me guys. No, sir. No. So first thing that you have to identify that what is making it unstable, then you have to identify what is different in these compounds. So the different part, the different fragment is this CH3 group, fluorine, bromine and iodine. These compounds, these species are different only because of these particular groups that is added, these particular atoms or group of atoms. Now, in these group of atom, each one of them has some ability to pull electrons, Now, the atom which will pull more electron, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. यस और नो? प्लीज टेल मी.
correct? Yes, sir. So if it is pulling more electron, ये electron निकाल रहा है यहाँ से ना, CO negative से, if it is pulling electron, so if it more pull of electrons will lead to less negative charge या more negative charge on the COO negative. अगर आप इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को खींच लें तो ज्यादा चार्ज बचेगा या कम चार्ज बचेगा CO नेगेटिव पे? CO नेगेटिव से चार्ज कम होगा या वहां पे ज्यादा हो जाएगी चार्ज? अगर आप चार्ज को खींच ले रहे हैं तो you are pulling away the charge from CO negative, then what will happen to the charge? It will increase or decrease? Tell me guys. अरे बोलो, Increase. इंक्रीज करेगा, CO नेगेटिव से इंक्रीज करेगा। मान लो यहाँ पे 10 चार्ज है, कुछ भी चार्ज है, और ये पुल कर रहा है 2, तो कितना बचा? 8 बचा ना, Decrease. Yeah. डिक्रीज ना। ठीक है, आई होप दैट मेक्स लॉजिकल सेंस। ओके, Yes, sir. so I will say that if it is pulling more electron, more pull of electron means less Decrease. negative charge. हाँ, decrease in the charge or less negative charge. अच्छा, मोर पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? More electronegative. More electronegative, huh? That means more electronegative element will give you less charge, और less charge की वजह से more stable. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. देखिए ये लॉजिकल ट्रेन है, लॉजिकल सीक्वेंस है, that you have to understand. तो अब बताइए क्या आंसर होगा ABCD में से? You have to compare which of the following is more electronegative, right? तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनमें से? अरे, oh my god. Tell me guys, which is B. yes, correct. Fluorine is the most electronegative element in the whole periodic table, right? That is why this B will be most stable. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Amna, Khadija, Khudeja. Yes, sir. Please write this down. Raise your hand once you're done. Please raise your hand once you are done writing. Waiting for Amna and Khadija. Just waiting for Khadija now. Check. Now, inductive effect is of two types. एक होता है प्लस आई इफेक्ट, plus I effect. So what is plus I effect? ऐसा inductive effect of such a kind which leads to gain in electron density in the carbon chain. क्या होता है इससे? Electron density increases in the carbon chain through inductive effect. Plus I effect क्या होता है? Gain of electron density in the carbon chain gain of electron density in the carbon chain
via inductive effect. तो इससे if you are having plus I effect, then electron density in the carbon chain will increase. Now there are a few groups which leads to plus I effect. So what are the plus I groups? उसको लिख लीजिएगा जरा. इसमें देखिए प्लस आई ग्रुप में आपके पास बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें से जो इंपॉर्टेंट है ना वो हम आपको बता देंगे. ठीक है. सो दीज आर द प्लस आई ग्रुप्स. ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर हैविंग नेगेटिव चार्जेस तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की बहुत ज्यादा चांस. नेगेटिव चार्जेस के पास है वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ही, बिकॉज इट वांट्स टू रिड्यूस द चार्ज. देन कम्स 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बन एटम्स. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. आप लोग याद है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आइसोमर से पढ़ाया होगा. आमना, खदीजा, खुदेजा, निशिता, यू रिमेंबर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. Yes, sir. है ना. Such carbon atom that is connected to 3 carbons, 3 degree, 2 carbons, 2 degree, 1 carbon. फिर उसके बाद लास्ट में CH3, that is methyl. Then we have the minus I effect. I hope from this particular line you can understand कि minus I क्या होगा. Minus I effect. Oh, इसमें भी plus I लिख दिया हमने, bad guys. Minus I effect. It is withdrawal of electron density from carbon chain via inductive effect. Via inductive effect. तो जैसे प्लस आई ग्रुप्स हैं वैसे ही आपके पास माइनस आई ग्रुप्स भी हैं. ठीक है. सो दीज आर दी माइनस आई ग्रुप्स. राइट दिस टिल हियर. यहाँ पे भी आई होप यू कैन मेक सम काइंड ऑफ सेंस दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट्स will be having more tendency to pull electrons. Then we have very highly NO2. So you have nitrogen, it is also very electronegative. Oxygen is also very electronegative. So you're having two atoms which are electronegative. Then Cn. Nitrogen is very electronegative, that we all know, but carbon, it is sp carbon. So sp carbon will be very electronegative. Then we have the aldehyde group, carbonyl, and so ये जो है ना आपको यहाँ से, this is important. ये आपको याद करना पड़ेगा. NO2, Cn, CHO, CO, carboxylic acid, then we have fluorine, chlorine, bromine, iodine, then the alkoxy group, then the hydroxy group, then the alkyne, then NH2, then we have the benzene ring. Why benzene ring is also electron withdrawing? Because all of these carbon atoms are sp2 hybridized. Now sp2 hybridized carbon atoms are electronegative because उसमें s character ज्यादा होता है. Okay, and then we have CH2, that is 2 sp2 carbon atoms are end में आपके पास है hydrogen. Please write this down. बाई पार्ट्स याद कीजिए तो आपको ज्यादा हेल्प होगा. तो देखिए आपको सबसे पहले याद कर लीजिए कि NO2 और CN स्टार्टिंग में है. एल्डिहाइड और कीटोन में देखिए A पहले आता है ना, ABCD में. तो एल्डिहाइड पहले, फिर कीटोन, देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद हमारे पास हैलोजेंस है. और यहाँ पे आपके पास एल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी. तो फिर से ये दिस इज एल्कोक्सी. एल्कोक्सी पहले आएगा, हाइड्रोक्सी बाद में आएगा. देन वी हैव दिस पार्ट. ठीक है. तो यहीं तक मेनली आपको मतलब कंपैरिजन करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो इन योर NCERT और जो बोर्ड्स में जनरली आते हैं, बोर्ड्स में तो नहीं, आपके स्कूल में जो आएगा उसमें दे विल कंपेयर प्लस आई और माइनस आई के थ्रू वो कंपैरिजन करेंगे. ठीक है ना.
इंटरनली माइनस आई का कंपैरिजन नहीं होगा, देयर इज अ क्वेश्चन, वो हम क्वेश्चन कराएंगे आपको तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, इतना लिखने के बाद प्लीज राइट दिस क्वेश्चन दैट इज देयर इन योर एनसीईआरटी. It is very similar to the question that we have done today. Which one of the two is expected to be more stable and why? अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग ना, ये सवाल पढ़ के देखिए, हो जाएगा ना आप लोगों से. टेल मी आमना, रिशिता, खदीजा, हियर आल्सो यार CH2 नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज आपने आइडेंटिफाई किया, हियर आल्सो नेगेटिव. कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ठीक है ना. यू शुड गो थ्रू दैट सेम लॉजिक, ओके. Yes. यस रिशिता, करेक्ट. रिशिता, आपने पूरा ऊपर वाला लिख भी लिया है. Yes, sir. I'm waiting for other people. Take 1 more minute, then I will explain. What happened? Amna and Khadija नहीं हो रहा है आप लोगों का सवाल. Tell me, Amna, are you able to understand the question? No. See this question na, similar सवाल था, which of the following is most stable? Okay. Raise your hand if you're done writing, guys. Amna, Khadija, and Khudeja. Raise your hand if you're done writing. We're waiting for Amna. ठीक है. Please listen, guys. First of all, I can understand that there will be a difficulty in understanding that ये लिखा ही क्या हुआ है. ठीक है. So this is N. अच्छा, आपने tell me it is O2 और N2. O में 2 लगा है या N में 2 लगा हुआ है, ये बताइए. आमना, खदीजा, first of all, you have to understand whether it is O में 2 लगा हुआ है या नाइट्रोजन में 2 लगा हुआ है. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. Oh, very good. That means आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, NO2, which is further attached to CH2. Yes, very good. Which is further attached to CH2 and then O negative. Versus we have CH3 दिया हुआ है, but आप इसको ऐसे मत लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा हाइड्रोजन CH2
CH2O negative. Now you can see that a certain part is common. CH2 CH2O negative is common, CH2 CH2O negative is common. अब बताइए प्लस यहाँ पे बताइए, आप समझ में आया सवाल? आप हो पाएगा आमना बताना ही नहीं चाह रहे एग्जैक्टली आंसर आप लोगों को, आमना खदीजा एंड खुदेजा, अब हो पाएगा? कैन यू प्रेडिक्ट नाउ व्हिच इज मोर स्टेबल? यस आमना, चलिए ठीक है। खुदेजा व्हाट अबाउट यू? पता नहीं खुदेजा इफ यू वाज प्रेजेंट और नॉट, अभी जो हमने सवाल कराया था उसमें। आमना टेल मी which will be more stable, the first one or the second one? हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए बहुत ही कितनी मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, और ये चीजें ना केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज आपको कंसेप्ट पता रहेगा, यू नो एवरीथिंग। The only difficulty that you had Amna was to understand, okay fine, this is the structure, correct है Amna? Yes or no, please tell me. Once you got the structure you can easily predict, है ना? So see, so these are the parts where you have to focus on, okay? अब स्ट्रक्चर लिखना आप लोग को टीचर हमेशा नहीं सिखाएगा, मतलब ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है ना। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और जब सवाल करने लगेंगे आप, देन यू विल गेट क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, और स्ट्रक्चर को ठीक से लिखने आपको समझ में आएगा, ठीक है? सो वंस यू सी कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, देन यू कैन प्रिपेयर ऑन दैट लेवल। तो यहाँ पे देखिए जरा, NO2 and hydrogen, we have to actually compare this. So NO2 is able to pull more electron, that will decrease the charge density, and when the charge density decreases, the stability increases. No, Khudeja, can you please turn your mic on? NO2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। खुदेजा नहीं खदीजा, आपने तो कुछ नहीं आंसर किया। खुदेजा यू आंसर। अरे सी खुदेजा, ओके वाला अगर सवाल रहता ना, वर्ड्स मेरे लिए ना, द वर्ड्स द मैटर अ लॉट, लाइक व्हाट वर्ड्स यू आर चूजिंग इन ऑर्डर टू रिप्लाई टू मी। इफ यू आर सेइंग ओके, इसका मतलब यू आर टेकिंग, ठीक है भाई सर आपने बोल दिया NO2 वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ठीक है NO2 वाला ज्यादा स्टेबल है। इफ यू से यस सर, फाइन, ठीक है, यस सर NO2 वाला ज्यादा स्टेबल, दैट मींस व्हाट? Okay, yes sir, I understood NO2 will be more stable because it is able to pull more electron. Okay, if you have written okay, so it reflects that you have not understood. आपने मान लिया इस बात को, NO2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हमने कहा। But please try to understand, this is unstable because of this charge, negative charge. As the negative charge decreases, as the negative, पूरा explanation logically हमने मतलब सारी स्टूडेंट्स को हमने बताया नहीं, राइट ऋषिता? हमने बताया क्या नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अनस्टेबल होता है कुछ, या आपने खुद बोला? बताइए ऋषिता। हमने बताया सर। आपने ही बताया, राइट? सो आई ऑलवेज ट्राई टू आस्क यू सच क्वेश्चंस कि आप लॉजिकली उस कंक्लूजन तक पहुंच पाए। कुछ ऊपर नीचे होता देन आई विल हेल्प यू गाइस, ठीक है? तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी है, तो ये नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। इस नेगेटिव चार्ज को कम कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन इससे खींच ले। The elements, the group of atoms which can pull more electrons, तो कौन से वाले होंगे? माइनस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा हो, राइट? So we can say that NO2 is having more minus I effect than hydrogen. That is why that is more stable. So आपको Y भी पूछा तो Y भी आपको लिखने आना चाहिए. You will write because NO2 has stronger minus I effect than hydrogen. Hence, the first structure is more stable. ठीक है, तो एग्जामिनर के लिए जो मेन पॉइंट है दैट इज दिस, NO2 हैज स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट, ये उसको पढ़ना है। आप पुल इलेक्ट्रॉन, NO2 इज एबल टू पुल इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें लिखिएगा अगर, तो शायद मार्क्स आपको ना मिले, है ना? इवन दो यू अंडरस्टैंड द थिंग कंप्लीटली, फिर भी बिकॉज यू आर नॉट वेरी गुड एट राइटिंग द आंसर्स, जो टीचर को चाहिए वो आपने नहीं लिखा है, ठीक है? तो आपने ये व्हेनेवर यू आर राइटिंग, हाँ एक चीज और हम बताते हैं, व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर ना इन 11th स्टैंडर्ड, किसी भी स्टैंडर्ड में, you try to include the words that you have learned in this particular class.
Pull is not a word that you learned in this particular class. Electron is not the word that you have learned in this particular class. But minus I effect, which is the term for pulling of more electrons. Stronger minus I का मतलब क्या हुआ? Pulling of electrons only ना. माइनस आई की जगह आपको लग रहा होगा कि पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यूज किया जा सकता है, बट नो, इफ यू आर गोइंग टू यूज पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वहां पे मार्क्स कट जाएंगी. बात समझ में आ रही है? ऋषिता, खुतेजा, खदीजा, नामना, यस नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. है ना? तो ये तो एक मतलब एक चीज हो गया कि आपको आती है चीज, तो उसके बाद जो आपको आता है उसको रिप्रेजेंट करना. ठीक है? सो यू शुड फोकस ऑन बोथ ऑफ देम. व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू राइट एन आंसर, think about the words that you have learned in this particular class. 11th standard में कोई चीज जो आपने सीखी है उस वर्ड को इंक्लूड जरूर करें. इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग तो वहां पे ऐसा लगेगा कि शायद आपने माइनस इफेक्ट नहीं. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. एक छोटा सा टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ, उसको हम लोग करते हैं, उसके बाद वी विल एंड दिस क्लास. ठीक है? एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान दीजिएगा. Acidic strength. Now please, let us suppose you have an acid A1H. If it dissociates तो ये आपको क्या देगा? A1 पे नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव देगा. जैसे HCl होता है डिसोसिएट तो इट गिव्स यू H प्लस एंड Cl नेगेटिव, उसी तरह से. देन वी हैव A2H. ये क्या देगा बोलिए गाइस? This acid will give you what ions? A2, बोलो भाई. A2 A2 नेगेटिव minus and H and plus. H plus. Then it will give you A, if you have A3H, then this will give you A3 minus and H positive. ठीक है? ध्यान दीजिए अपना. ठीक है? Don't, no need to write this down. Please listen and understand. Stronger acid कौन होगा? Which will be stronger acid? The one which can break this bond easily, correct guys? Which can break AH bond easily, or we can say that which can dissociate into the AM minus. अच्छा, एक और चीज आपको बता देते हैं. When hydrogen is removed from the acid, when hydrogen is removed from the acid, the part that remains is known as conjugate base. करेक्ट है गाइस? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना. एक नया वर्ड सीखा आपने, कॉन्जुगेट बेस. याद रहेगा व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस? यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, व्हाटएवर रिमेन्स इज कॉन्जुगेट बेस. क्लियर है गाइस? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है. So I can say that a strong acid can easily form conjugate base. Yes or no? अगर वो conjugate base आसानी से बना ले रहा है, if it can easily form conjugate base, that means it can easily leave the H plus ion. वो आसानी से H plus को बोलेगा टाटा बाय बाय, गो अवे. Correct guys? Yes or no please tell me. If an acid, Yes, sir. make sense? Yes or no? Yes, sir. आमना, खतीजा, ओके. अब बताइए, लेट अस सपोज अगर हम ये कहें स्टेबिलिटी ऑफ जो कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे हमारे पास है, उसमें हम मान लीजिए कहते हैं दैट A2 नेगेटिव इज मोस्ट स्टेबल. उसके बाद है आपके पास A3 नेगेटिव एंड देन यू हैव A1 नेगेटिव, इट इज लीस्ट स्टेबल. यानी कि A2 नेगेटिव सबसे आसानी से बन जाएगा. बोलिए गाइस, यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. अगर A2 नेगेटिव आसानी से बन जाएगा, दैट मींस A2H इज द मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. करेक्ट है गाइस? मेरे बोलो भाई. Yes, sir. है ना? देन A3H मेक सेंस? यस और नो? बाकी लोग प्लीज बोले आमना, खदीजा एंड खुदेजा. डज दिस मेक सेंस? Acidic strength is directly proportional to stability of conjugate base. अब बताइए conjugate base के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? What charge is present in the conjugate base? Negative. Conjugate base पे कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है? That means I can also say जो स्टेबिलिटी होगी ना conjugate base की, वो डिपेंड करेगी on the, it will be inversely proportional to charge. करेक्ट है? अरे बोलो भाई. Yes, sir. है ना? Inversely proportional.
अच्छा, जितना चार्ज कम उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। चार्ज कम करने के लिए आपको कौन चाहिए, प्लस आई चाहिए माइनस आई चाहिए? विच इज एबल टू पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बताओ। Plus I. अरे माइनस आई ना भाई। Minus I. प्लस आई तो प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, yes or no? Yes, sir. है ना? ठीक है, व्हाट डिड आमना से? आमना भी प्लस आई बोल रहा है, ऐसे कैसे? प्लस आई अगर आप दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन और दे देगा। इफ यू आर गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज, यस और नो? Yes, sir. है ना? So I can say stability is directly proportional to minus I group. माइनस आई ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। मेक सेंस, यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. ठीक है, तो इसको बस ना आप लोग देखिए, दिस इज द कंक्लूजन। ये तो हम लोगों को पता है लॉजिकल, दिस इज द कंक्लूजन व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, चलिए राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग। प्लीज रेज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग। उसके बाद हम लोग करेंगे 12th स्टैंडर्ड का सवाल। रेज योर हैंड वंस यू आर डन। Dija just waiting for you. Dija just waiting for you now. Okay, ठीक है। अच्छा चलिए, कैन यू प्लीज गाइस टर्न योर माइक ऑन एंड टेल मी, कंपाउंड जिसके पास माइनस आई ग्रुप होगा, एक ऐसा एसिड जिसके पास माइनस आई ग्रुप होगा, दैट विल बी मोर एसिडिक और लेस एसिडिक? माइनस आई ग्रुप रहने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम, बोलो भाई। माइनस आई ग्रुप रहने पर ज्यादा। ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ हाइयर, राइट? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल आएगा, देखिए। वेरी गुड, माइनस आई ग्रुप जहां पे, ठीक है, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। माइनस आई ग्रुप कहाँ दिख रहा है आपको, ए में या बी में? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, चैट 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 B. चैट। हाँ चलो ठीक है, बी, ठीक है, बी में सबको दिख रहा है? रेज योर हैंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, रेज योर हैंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, रेज योर हैंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि बी में। देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्लोरीन है विच इज अ माइनस आई ग्रुप, दैट इज वाई बी विल बी मोर एसिडिक। चलिए सेकंड के ए और बी में चैट में आंसर करेंगे ऑल ऑफ यू गाइस, चैट में आंसर कीजिए। हियर यू कैन सी माइनस आई ग्रुप इन बोथ ऑफ दी कंपाउंड्स, बट ज्यादा माइनस आई किसका है? इन द चैट प्लीज, विच विल बी मोर एसिडिक, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? करेक्ट ऋषिता। बाकी लोग यार प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, ठीक है ना? मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुरंत समझ में आ जाएगा। सेकंड वाले का आंसर कर रहे हैं आमना, यू आर आंसरिंग फॉर द सेकंड वन और द फर्स्ट वन? फर्स्ट सवाल का है, सेकंड सवाल का है? खदीजा एंड खुदेजा। ओके आमना, ठीक है, खदीजा एंड खुदेजा, नो आंसर फ्रॉम यू गाइस। रेज योर हैंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अच्छा बाकी लोग फिर ना फोर्थ का बताइए, ऋषिता है नाम ना, फोर्थ वाले का बताइए, ए या बी? यार ये तो गलत बात है ना, खदीजा एंड खुदेजा। आप आप लोग कुछ आंसर कुछ बोल ही नहीं रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस खदीजा टेल मी। I didn't understand.
You did not understand? अच्छा, you have written -I groups वगैरह ना? लिखा है पहले वाले में बताइए, कैन यू सी एनी -I ग्रुप फर्स्ट क्वेश्चन में? नहीं, मतलब ए स्ट्रक्चर नहीं, ए और बी दोनों में से किसी में नहीं है? नहीं है। यार बी में फ्लोरीन है ना, देखो नहीं दिखा था फ्लोरीन? अच्छा, नहीं दिख रहा है। नहीं दिखा था, बड़ा कर दे हम पिक्चर। हाँ, नहीं लाज है, ठीक है। चलिए, हाँ। तो अब देखिए पहले वाले में तो कुछ नहीं है, राइट? नहीं है। हाँ। ठीक है, और जो चीज आपको ना अलग देखनी है, क्या अलग है यहाँ पे, अब अगर कंपेयर करेंगे तो CO2H इसमें भी है, CO2H इसमें भी है, ठीक है। हाँ। एक कार्बन यहाँ पे भी है, एक कार्बन यहाँ पे भी है। इस हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। इसमें 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, इसमें 1 फ्लोरीन एक्स्ट्रा है, करेक्ट है गाइस? खदीजा, हाँ। है ना? तो हमको बेसिकली कंपेयर करना, हाइड्रोजन ज्यादा -I है या फ्लोरीन ज्यादा -I है, कौन ज्यादा -I है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो कौन ज्यादा एसिडिक? फ्लोरीन वाला। मेक हाँ। सेंस? ठीक है। यस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या अलग है, ए वाले में देखिए और बी वाले में देखिए, एंड टेल मी। CO2H यहाँ पे भी है, CO2H यहाँ पे भी है, फ्लोरीन है यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन। बाकी CH2 सेम और CH2 सेम, करेक्ट। कौन ज्यादा -I है फ्लोरीन और क्लोरीन में से? Look at the notes, no problem. Which is more -I, which is stronger -I? नोट्स नहीं लिख रहे हैं क्या खदीजा? देख रही हूँ। देख रहे हैं, ओके। कहाँ देख रहे हैं? -I ग्रुप में देखिए, -I फ्लोरीन, तो ए वाला ज्यादा हो जाएगा इसमें, दिस वन इज मोर, करेक्ट है। हाँ। अच्छा देखिए, अब बताइए फोर्थ वाले में बताइए क्या देखें, व्हाट इज डिफरेंट? फोर्थ वाला, फ्लोरीन है एक में। इसमें फ्लोरीन है और इसमें क्या है? हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन या हाइड्रोजन? अरे जल्दी बोलो। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? अरे यार अभी तुमने बोला यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन में, दिस डजंट मेक सेंस खदीजा, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है ना? तुक्का नहीं मारना है प्लीज, थोड़ा आप टाइम ले ले, बोल दीजिए सर हम देख रहे हैं नोट्स वगैरह। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा वाला सवाल वो हम करते हैं, ठीक है। हियर वी हैव हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3 4 कार्बन्स। फ्लोरीन आपके पास फर्स्ट कार्बन आटम में है। हियर वी हैव 1 2 3 4 कार्बन्स, ये COOH है, माय बैड। ये फ्लोरीन आपके पास यहाँ पे। नाउ बोथ ऑफ देम आर हैविंग फ्लोरीन ओनली। व्हाट इज द डिफरेंस तब? क्या डिफरेंस है बताइए गाइस? टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में तो फ्लोरीन है। CH3 CH, and नो CH3 वगैरह नहीं है डिफरेंस। डिस्टेंस जो है दोनों में अलग है। यू ऑल नो दैट दिस इज द ग्रुप, ये ग्रुप जो है ना, यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, राइट? यहीं पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा। सो द कंपाउंड विच इज हैविंग -I ग्रुप नियरर टू द -I, दैट विल बी व्हाट, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर -I यहाँ पे देगा। मेक सेंस, यस और नो? इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट ना। तो फ्लोरीन तो अपना जादू दिखाएगा, बट फ्लोरीन अपना जादू कौन से स्ट्रक्चर में दिखाएगा ज्यादा? सेकेंड वाले में, बिकॉज इट इज नियर टू द COOH, ठीक है। तो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। मेक सेंस आमना, खदीजा, निशिता? yes sir. है ना? फ्लोरीन ज्यादा -I कहाँ दिखाएगा सेकेंड वाले? प्लीज राइट दिस डाउन। आज के लिए इतना ही। We are going to start with resonance in the next class.